स्पेस के दो सीक्रेट वैक्यूम्स जो कि आपको दे सकते हैं सीवियर लेवल के साइकोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया और एपिलेप्सी। अनबिलीवेबल, राइट? हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु घुले एंड आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आपके ब्रेन की डीपेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट से। वो कैसे कनेक्टेड है स्पेस के दो वैक्यूम से जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इट स्टार्ट्स एज, हमने बचपन में स्कूल में एक्लिप्स कैसे होता है ये तो पढ़ा ही होगा, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज अर्थ एंड सन के बीच में मून आ जाना या फिर मून एंड सन के बीच में अर्थ आ जाना। लेट मी एक्सप्लेन। सो ये एक सिंपल डायग्राम है, हम स्कूल में जो एक्लिप्सिस पढ़ते हैं उसका। सो हियर इट इज़ द सन, दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द डे टाइम हियर, क्योंकि यहाँ पे है सन, और दिस विल बी आर नाइट टाइम। तो the problem with this two-dimensional diagram is, what do we learn in the school? How do eclipses happen? It says कि during the solar eclipse which happens during the day, यहाँ पे मून है जो अर्थ एंड सन के बीच में जब आ जाएगा, यहाँ से सन से लाइट आ रही है जो कि यहाँ पे एक शैडो कास्ट कर रहा है। ओके, till here. So solar eclipse happens during the no moon night. It is gonna happen in the daytime, और जब moon earth and sun के बीच में आ जाएगा तो of course at the night time there will be no moon, and the lunar eclipse happens on a full moon night only, जबकि अर्थ आ जाती है मून एंड सन के बीच में। उस दिन फुल मून होता है, तो जो सन से लाइट मून पे आती है वो प्रॉपरली फुल्ली रिफ्लेक्ट करके हमें दिखती है। सो दैट इज द रीजन वी सी द फुल मून ऑन अ फुल मून नाइट। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स, ऐसे शैडो कास्ट होती है, जो सन की जो लाइट है वो अर्थ पे आएगी एंड इट विल कास्ट अ शैडो ऑन द मून लाइक दिस। तो उसकी वजह से will not be able to see the moon completely, and this is the diagram of lunar eclipse. So now the problem with this diagram is, ये हर महीने होता है, we can see a full moon night and no moon night during every month, then why can't we see solar and lunar eclipse every month? Let me explain. So now let's switch to a three-dimensional diagram from a two-dimensional diagram to understand every month solar और lunar eclipse क्यों नहीं होता है। दिस इज अ थ्री डायमेंशनल डायग्राम, दिस इज द सन एंड ये है ग्रीन कलर में हमारा अर्थ, और दिस इज आर अर्थ का ऑर्बिट, और ये लेते हैं हमारा मून। नाउ द थिंग हियर विद मून इज, मून्स ऑर्बिट इज नॉट एज सेम एज अर्थ's orbit. Moon's orbit is slightly tilted if we compare to the Earth's orbit. So suppose this is the Moon's orbit around the Earth, it will go like this. Okay, या सो अर्थ के ऑर्बिट और मून के ऑर्बिट में देर इज़ अ 5 degrees difference here and both this side as well. This is a 5 degrees difference. Now this 5 degrees का difference is the main reason why we can't see eclipses every month. So now the place where moon's orbit and earth's orbit are intersecting, जब फुल मून के टाइम पे मून वहाँ पे होगा, विच विल हैपन ओनली ट्वाइस इन अ ईयर, या फिर नो मून के टाइम पे मून यहाँ पे होगा, only then we will be able to see solar and lunar eclipses. Let me explain how. Here if we see, the moon will go from above the earth because of the 5 degrees difference here, and during the lunar eclipse it will go from 5 degrees below the earth because of 5 degrees का difference on this side also. So what will happen, the shadow won't be cast properly. Okay, so it happens only when these 2 points align with sun's position with respect to earth. So when will that happen? So the place where earth's orbit और moon's orbit intersect कर रहा है, जब full moon के time पे moon वहाँ पे होगा, which will happen only twice in a year, या फिर no moon के time पे moon यहाँ पे होगा, only then we will be able to see solar and lunar eclipses. Let me explain how. Here if we see, the moon will go from above the earth because of the 5 degrees difference here, and during the lunar eclipse it will go from 5 degrees below the earth because of 5 degrees का difference on this side also.
So what will happen? The shadow won't be cast properly. Okay, so it happens only when these 2 points align with sun's position with respect to earth. So when will that happen? It will happen only when the earth is on this side. So like that. So what will happen now? These 2 points will come here that way, and moon का orbit होगा. How will the moon be? Like this. This will be the moon's orbit. Exactly intersecting. यहाँ पे जब sun का light आ रहा है, तो during the full moon what happens? During the full moon we can see the moon fully. So the moon will come on the night side. So this is the day side, this is the night side, क्योंकि यहाँ पे sun है. So full moon पे क्या होता है, जब हम full moon देखते हैं तो moon will come here on this side perfectly, and only then जब यहाँ पे shadow cast होगा तब we can see a lunar eclipse. And same is with the solar eclipse. Solar eclipse के time पे it happens on a no moon night, on a no moon day. Yeah, so no moon के time पे we can't see the moon during night, so moon is definitely on the this side. So when moon comes here exactly, then we can see the solar eclipse, because यहाँ से जो shadow cast होगी, if the moon is exactly at this point, then this will cast a proper shadow on the earth like this, and then we won't be able to see the sun during the daytime. So this is how solar eclipse happens. This can happen only one day in 6 months. तो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में पूरा एक मंथ लगता है. If we divide this in two parts, these are the first 6 months. Let's assume these are the first 6 months, and then this side there will be 6 months, next 6 months. So कब होगा ये? जब ये पॉइंट्स अलाइन होंगे सन के साथ. दिस इज अर्थ का ऑर्बिट विच इज एलिप्टिकल. तो ये पॉइंट्स यहाँ पे जब अलाइन होंगे, आई ड्रॉ देम इन रेड हियर, एग्जैक्टली हियर, जब यहाँ पे अर्थ होगी, अर्थ and the moon will perfectly align here. Now what will happen if earth is this side? If earth is this side, the points will still remain like this, and orbit of moon will be this, which is not again aligning perfectly here, because it will go from below the earth and above the earth at that time, because यहाँ से जब sun का light आएगा तो we won't be able to see an eclipse. So this is how eclipses happen only twice a year, solar and lunar eclipses collectively twice. We are able to see four eclipses, only four eclipses in a year. Sometimes there are rare cases where we can see more than four eclipses in a year. So now there's a one more catch in this. What do we call these imaginary points? We call them the north node and south node. These two keep changing. These imaginary points, they don't change very quickly. It takes them around 18 months to change. How is it calculated? It is calculated by the retrograde motion. Now, what is retrograde? Retrograde is the anti-clockwise. These points are exactly 180 degrees apart from each other. These don't have any physical existence. These are just like a vacuum. This is just a space. In traditional astrology, north node is known as the Rahu and south node is Ketu. These imaginary places. And how these are calculated? By the retrograde motion. Retrograde motion can be said as the anti-clockwise motion. These keep moving anti-clockwise. तो ये होगा Rahu and Ketu, north node and the south node of the moon, because they are caused because of the moon. So we call them north node of the moon and south node of the moon.
aka Rahu and Ketu. So in traditional astrology, it is calculated as, so this is just a blank horoscope. हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं. सो वी नो दैट अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट वी आर लुकिंग थिंग्स अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू. सो फॉर दैट रीजन हम अर्थ को बीच में रख के विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम स्टडी करते हैं इन पॉइंट्स को. सो इफ सो वन zodiac sign is 30 degrees, space of 30 degrees. So 30 into, these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 30 into 12, these are this is entire 360 degrees of the space with respect to earth. Rahu and Ketu, north node and south node, are exactly 180 degrees apart from each other. So when Rahu stays here, that is the north node, Ketu stays on this place, and these two keep changing in a retrograde motion. So even though all planets move in this direction, that is the clockwise, these don't follow the rules. ये एस्ट्रोलॉजी के रूल ब्रेकर्स है. जो नॉर्मल प्लैनेट्स क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, दीज कीप मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर जस्ट शैडो प्लैनेट्स. इन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी वी कॉल देम छाया ग्रह. So now one more catch in this is, how do they affect us humans? तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में राहु एंड केतु कनेक्टेड होते हैं हमारे काउडेट न्यूक्लियस से, जो कि हमारे बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, जो कि हमारे इमोशनल ब्रेन का पार्ट है. तो लेट मी शो यू, स्टे ट्यून्ड, आगे और एक सरप्राइज है. सो दिस इज द इमेज ऑफ आवर काउडेट न्यूक्लियस. इट इज इन a U shape like this. This is caudate nucleus. ये है caudate nucleus का tail. Now traditional astrology में, if we search on Google, what are the symbols of Rahu and Ketu? Look at that. This is a U-shaped structure, and this is another U-shaped image. How similar it is. अगर हम देखते हैं कि caudate nucleus में माल फंक्शंस होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, you can search on Google. Then hypertension, stress, anxiety, hyper anxiety. If you look at the extreme disorders that are caused by caudate nucleus, they are like dementia, epilepsy. अगर और ज़्यादा सीरियस हो जाए तो it can also cause people hallucinations. Very severe mental neuropsychotic disorders हो जाता है. Now these are the severe levels. Now how can this information help me as a normal person? Let me explain. So the point over here is, we don't have to always think about the most severe and serious levels of disorders. In traditional astrology, there are some symptoms जो कि बताया गया है राहु एंड केतु इम्बैलेंस में होने के. इट इज़ लाइक कि कुछ लोग ऐसे अगर बैठे हैं तो पैर हिलाते रहते हैं. देन दिल कीप स्क्रिबलिंग बिहाइंड द बुक. फिर वो पेन होगा, पेन को ऐसे मुंह में डालेंगे, ऐसे ऐसे कुछ तो घुमाएंगे, कुछ तो करेंगे पेन के साथ. नहीं तो दिल कीप बाइटिंग देयर नेल्स. दिस इज अ रियली वेरी डर्टी एंड disgusting thing which some people do. Then some people keep biting their lips. अगर आपको ये सब हैबिट्स है तो psychology says that this is because of anxiety, but just try once. There's no harm in trying this. Just leave these habits completely for 1 week. जस्ट 1 वीक फॉलो करके देखो, एंड 1 वीक के बाद आपको जो मेंटल क्लैरिटी फील होगा, आप खुद ट्राई करके देखो एंड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो आपके रिजल्ट्स, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट इन बिल्डिंग ट्रस्ट विद न्यू ऑडियंस. सो या, एक्लिप्स आ रहा है, लूनर एक्लिप्स आ रहा है इंडिया में ऑन संडे. तो इस दिन इट इज़ जनरली एडवाइज्ड, इस टाइम में कुछ खाना पीना नहीं होता है एंड पूजा नहीं करना होता है. टू बी स्पेसिफिक, पूजा करना नहीं होता है इस टाइम में. सो आई वोंट एनफोर्स, बिकॉज आई एम सीइंग, क्योंकि आपको करना चाहिए. फिर आपको इफेक्ट्स दिख रहे हैं आपके ऊपर या रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट. One some simple things you can do is,
You can do japa, or you can do meditation by just sitting idle. So yeah, that was it for today, guys. So share this video with your friends and family for telling them what eclipse really is and how does it affect your mind. And अच्छा लगे तो do like, share and subscribe. You can also review me in the comment section that मैं अपनी वीडियोस में और क्या बेटर करूँ कि जिससे आपको मेरी वीडियोस देखना और अच्छा लग सकता है. And thanks a lot for watching, to the people who are still watching till the end. Thanks a lot. So do follow for more. I love you all. Bye.